हेलो बच्चों, वी आर स्टार्टिंग the part 5 series of videos for the chapter indefinite integration, and this part 5 deals with the methodology of integration by partial fraction. Now what is that partial fraction? We will see. Before that, I want to remind you how we have studied this chapter. We have studied this chapter in 5 parts, and now we have come to the 5th part. We have already got the videos of first 4 parts, and my request is you must see those videos right from part 1 videos like part 1A, 1B, 1C, then 2A, 2B, then 3A, 3B, like that. Part 1 deals with introduction and basic formulae and rules of integration. Part 2 deals with integration by substitution. Part 3 deals with special integral. Part 4 deals with integration by parts. And now we are coming to partial fraction. Now what is partial fraction we will see. Okay? Now, these are the basic elementary formulae I am just giving you as a total subject goes in your mind. These are special integrals. We have derived these formulae. They are 7. On this page I have given 4. These are 7. समझ गए? Now, what is partial fraction? Now, partial fraction is two types. One is proper rational fraction and another is not a proper rational fraction. Now what is proper and what is not proper? Now if I give you the fraction like x upon x plus 2, x minus 3. Now what is the degree of numerator? 1, because this is x raised to 1. And what is the degree of denominator? It will be 2, because there are 2 brackets and each bracket x is there. So it will make it x square. So degree of numerator is 1, which is less than the degree of denominator, which is 2. So this is a proper rational fraction. समझ गए बच्चों? Now if it is a proper rational fraction given in the example, then you go to straightway step 3. If it is not a proper rational fraction, means degree of numerator is more than the degree of denominator. For example, if they give like this, x cube upon x cube upon x plus 2 x minus 3. So what happens? X plus 2 and another bracket there is x minus 3. What is the degree of denominator? 2. What is the degree of numerator? 3. So numerator is bigger than denominator. So what is to be done? We have to reduce this by division, which I will explain you in the example. Now, you have to see what kind of rational form is this. All these are proper rational forms. So after you make it proper rational form, or if the example is already in proper rational form, you have to see whether it is of type 1 or whether it is of type 2 or whether it is of type 3. Normally in Maharashtra board they ask type 1, but you should be prepared for type 2 and type 3. So type 1 में है, that means there are brackets
degree of numerator is less than denominator. So we just put A, B, C and find the value of A, B, C. If this one of the factor is repeated, like यहाँ x minus 1 is repeated, x minus 1 into x minus y, that's why it is x minus 1 square. So we put x minus 1 and x minus a square, x minus a and x minus a square. And if it is one of the factor is quadratic, then above quadratic we write dx plus 2. समझ गए? Example will make you perfect. चलो example करेंगे. Now we have to find integral x square plus 2 upon x minus 1, x plus 2, x plus 3. Now बच्चों, you need not write this in examination, but you must confirm that it is a proper rational fraction. How you will confirm? Degree of numerator कितना है? x square मतलब 2. Degree of denominator कितना है? 3 ब्रैकेट है, हर एक में x है, तो it becomes 3. So this is a proper rational fraction. और यहां रिपीट नहीं है, देखो 3 ब्रैकेट अलग अलग है. So it is a type 1. So now what can I write? X square plus 2 divided by x minus 1, x plus 2, x plus 3 is equal to, यहां एक ब्रैकेट लिखूंगा मैं, x minus 1 प्लस यहां दूसरा ब्रैकेट आएगा x plus 2 प्लस थर्ड ब्रैकेट x plus 3. Now it is the first type because it is a proper partial, proper rational fraction and no bracket in denominator is repeated. So यहाँ it will be straight way A, B, C. A, B, C will be some rational numbers. It can be 1, 2, 3, minus 1, minus 2 or 3 upon 15, 2 upon 5, anything. So now see, numerator x square plus 2 will be equal to A into bracket, यहां अगर मैं कॉमन डिनोमिनेटर लेगा तो तीनों ब्रैकेट आएगा, बट a का डिनोमिनेटर ऑलरेडी x माइनस 1 है, तो इट विल बी x प्लस 2 बैलेंस 2 ब्रैकेट x प्लस 2 प्लस b इंटू ब्रैकेट, ये ब्रैकेट नहीं आएगा, x माइनस 1 x प्लस 3 प्लस c इंटू ब्रैकेट, x प्लस 3 नहीं आएगा, x minus 1 x plus 2. Now I have to find ABC. Now for that, step 1, what is that? Put x is equal to 1. Why? अगर मैं x equal to 1 डालेगा तो this bracket will be 0, this bracket will be 0, then I get the value of a straight way. समझ गए? यहां x equal to plus 1 डालेगा तो this entire term becomes 0, this entire term becomes 0. So what I get? 1 square plus 2 is equal to a into bracket 1 plus 2 1 plus 3. बराबर है, x की कीमत में 1 डाला, यहां कुछ भी नहीं आएगा, यहां 0 आ जाएगा, यहां भी 0 आ जाएगा. समझ गए बच्चों? नाउ 1 square is 1 and 2. 3 is equal to a into bracket 3 into 4. गलती है कुछ? चेक करो हर एक टाइम. 1 plus 2, 1 plus 3, 2 plus 1, 3. So 3 gets cancelled. A I get as
1/4. दिस इज माय फर्स्ट रिजल्ट. ऐसा एग्जाम्पल 4 मार्क के लिए महाराष्ट्र में आ सकता है. नाउ आई यूज द सेम इक्वेशन एंड पुट अनदर वैल्यू ऑफ x टू गेट b and then another value of x to get c. चलो कैसा करेंगे? Let us write this equation again. What is that equation? X square plus 2 is equal to a into bracket x square plus 2 into a into bracket x plus 2 x plus 3. यही है हमारा x plus 2 x plus 3 x plus 2 x plus 3 plus b into bracket x minus 1 x plus 2 x minus 1 x plus 3 plus c into bracket x minus 1 x plus 2 x minus 1 x plus 2. बराबर है. नाउ आई वॉन्ट टू फाइंड b. तो यहां में x इक्वल टू -3 डालेगा तो क्या होगा? ये 0 हो जाएगा, ये ही 0 हो जाएगा, मुझे c मिलेगा. चलेगा? चलो पहला c निकालेंगे. सो लेट x इक्वल टू -3. तो -3 स्क्वेयर प्लस 2 इज इक्वल टू, अभी ये पहला टर्म 0 हो जाएगा, कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं. दूसरा भी टर्म 0 हो जाएगा बिकॉज दिस x इज -3, तो दिस बिकम 0 प्लस c इंटू ब्रैकेट -3 minus 1 into another bracket -3 plus 2. ये प्लस माइनस बहुत अच्छी तरह से समझा के ले लो. सो 9 plus 2 is equal to c into bracket -4 minus 1. So 11 is equal to, ये माइनस इसको प्लस कर देगा, 4c. So c I get as 11/4. बच्चों मैं एक छोटी सी पते की बात आपको कह रहा हूं. क्या कह रहा हूं? जब भी आप बोर्ड का पेपर सॉल्व करेंगे तो ये जो माइनस साइन है ना, बिकॉज यू यूज नॉर्मली ब्लू बॉल पेन, और जो बोर्ड के जो रूल्ड पेपर आते हैं आपके पास, दैट लाइन इज ऑल्सो ब्लू. तो इफ यू पुट ऑन दिस ब्लू लाइन your minus sign, you will not see this properly. बताऊं मैं कैसा हो जाता है? You will think it is a silly thing, but see, यहां ये ब्लू लाइन है और उसके ऊपर आप माइनस लिखेंगे. कैसा लिखेंगे? यहां माइनस लिखेंगे. तो ये आप भूल जाते हो. You forget this minus. I am not telling you out of my imagination. I had a very clever girl in 12th standard and she was expecting 93 marks in maths and she got only 81 because around 12 marks she had lost for such mistake. She made such mistake in 3 examples. One was matrices, one was differential equation and one was application of derivatives. ऐसी गलती मत करो आप. समझ गए? ये तुम्हें कोई बताएगा नहीं, बट ऐसा होता है बच्चों, ऐसा हुआ है. समझ गए? तो चलो अब ये माइनस एंड यूज प्रॉपर ब्रैकेट्स. यहां भी मैं ब्रैकेट क्यों लगाया? नहीं तो आप लिखते थे -9 plus 2. समझ गए? चलो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट b. तो b अगर हमें फाइंड आउट करना है तो आई विल पुट x इक्वल टू -2. तो ये ब्रैकेट 0 हो जाएगा, ये ब्रैकेट 0 हो जाएगा, मुझे b का वैल्यू देना. सो लेट x इज इक्वल टू -2. मेथड समझ गए आपको?
समझ गया मेथड? तो -2 ब्रैकेट स्क्वायर +2, ये राइट हैंड साइड में मैं डाल दिया. फर्स्ट टर्म विल बी 0, सेकंड टर्म विल बी b into -2 - 1 -2 + 3 प्लस ये लास्ट वाला टर्म 0 हो जाएगा बिकॉज x वी आर पुटिंग एट -2. गलती है कुछ नहीं? चलो 4 + 2 is equal to b into -3 into +1. समझ गया बच्चों? तो b is -3 + 1. समझ गए बच्चों? तो 6 is equal to -2b. So b becomes 6 upon -2, 6 upon -3 -3. तो b is equal to -2. बराबर है बच्चों? इतना एग्जाम्पल अगर 4 मार्क का है तो इतना होने के बाद क्रॉस चेक करो ए बी सी का वैल्यू, देन गो फर्दर. देन व्हाट हैपेंस यू जस्ट सी व्हाट वी हैड रिटन. वी हैड स्टार्टेड राइटिंग x² + 2 upon x - 1 x + 2 x + 3 is equal to a upon x - 1 plus b upon x + 2 plus c upon x + 3. We started with this and we found out a b c. बराबर है? तो what was our a value बच्चों? चलो यहां देखेंगे. We had got a as 1/4, b as -2, c as 11/4. So a is equal to 1/4. So my example becomes 1/4 upon x - 1 plus what was the value of b? We got -2 upon x + 2. And what was the value of c? 11/4 plus 11/4 x + 3. अभी सिंपल हो गया. Now my I becomes, my I is this integration of this. So I can write this separately. So I can write down 1/4 integral 1 upon x - 1 dx. अभी ये 2 का माइनस है. So this 2 I can write down -2. So -2 integral 1 upon x + 2 dx. ये स्टेप समझ रहे हैं आपको? ये स्टेप समझ गया? प्लस 11/4 times integral 1 upon x + 3 dx. समझ रहे हैं बच्चों? तो इसका इंटीग्रल कैसा आएगा? बिकॉज व्हाट आई हैव रिटन दिस इंटीग्रल ऑफ दिस एंटायर थिंग विच आई वांट टू फाइंड आउट. नाउ प्लस प्लस, तो यहां मैंने जो न्यूमरेटर है दिस आई हैव टेकन आउटसाइड द इंटीग्रल साइन. तो दिस विल बी 1/4 1 upon ax + b.
log ax plus b upon a. a means x का कोएफिशिएंट, यहां तो x का कोएफिशिएंट 1 है सब जगह, so log x minus 1 minus 2 times log x plus 2 plus 11 upon 4 times log x plus 3 plus c. This is the answer. And you know a log value we take only modular. So better to write this modular value like this. समझ गए बच्चों? चलो इसका प्रैक्टिस अच्छी तरह से करो. Note down this step properly. Note this. क्या किया है मैंने? ये जो इंटीग्रल था इसको मैंने पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके प्लस माइनस किया, और जो ए बी सी था दैट बिकेम जस्ट अ मल्टीप्लीकेशन फैक्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर इंटीग्रल. समझ गए? चलो अभी इसके आगे का जो वीडियो करेंगे हम लोग वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल करेंगे. थैंक यू.